namaste. My name is Divvya Guptaa and I welcome you all for another episode of Utalk with UIncept in association with Divya's Closet. The outbreak of COVID-19 has led to the closure of many institutions, which has impacted students, teachers, parents and staff members in a big way. In the coming years, the automated institute management systems and ERP solutions will be very necessary to prepare institutions for all such crises and situations. One of our portfolio companies, Campus365, has been successfully able to fill this void and are here to share their journey from bootstrapping to raising funds. I would like to welcome Mayank, co-founder Campus365, on our webinar series You Talk with UIncept. Welcome, Mayank. Thank you for having me on the show, Divya. My pleasure. So, Mayank, what Campus365 is all about? Let our audience know. Campus365 partner with schools and provides them an end-to-end solution for managing their entire institute along with their entire institute process. We also help students in providing great learning experience that makes them future ready. What makes Campus365 different than any of its competitors in the market? A lot of people ask me this question many times, Divya. So how we are different as compared to our competitors is basically, we have solutions related to how we can help schools in optimizing their process. And we are also providing a NEP scoring part to our schools that helps them get ready for an NEP as soon as it's been implemented for the rest of the states. And we also have security tracking solutions for the students that gives confidence to parent to send their child to school on everyday basis, and they can keep a track of what exactly their child is doing inside the school as well as outside the school. So, Mayank, tell us about yourself, how your journey has been since childhood, and what was that turning point that came into your life when you thought of starting Campus365? Divya, as you know, I come from a defense background, so अनुशासन हम लोग को starting से ही सिखाया जाता है, and even in families as well. So we have always followed that discipline culture in home, जहाँ पे हमें कुछ extra नहीं करने दिया जाता था as compared to, other than focusing on education. So since childhood until 12th, until college, I have completely focused myself on education. My family always wanted कि मैं भी एक government job करूँ, government employee बनूँ, but while preparing for these government exams, I was also working into corporates because मैंने IT से मास्टर्स किया है and I passed out from IT, so हमें एक internship करनी होती है. And while I was doing this internship, I liked this IT culture a lot, and eventually I did try for government exams, but I failed. But I took that failure as in a positive way, and whatever failures I faced in preparing myself for government exams, I implemented those in a positive way for myself to prepare for a corporate IT culture. And that's how I evolved and came into an IT field, wherein I have worked into multiple corporate companies previously for like last 7 years. And I moved to Gurgaon. When I moved to Gurgaon, you might know कि 2017 में एक स्कूल में एक बच्चा था जो स्टैब हो गया था, एंड एवरीवन वाज ब्लेमिंग कि बस ड्राइवर या बस कंडक्टर ने स्टैब किया है, बट स्कूल का बच्चे का फ्रेंड ही था जिसने उस बच्चे को स्टैब किया। Right, there was this case that came in 2017. Right. So while working in a corporate company गुड़गांव में 2017 पे, I thought of कि कुछ सॉल्यूशन ऐसा होना चाहिए जो पेरेंट्स को, वर्किंग पेरेंट्स को स्पेशली ये ईजीनेस दे कि अगर आप ऑफिस में भी हैं तो यू कैन कीप अ ट्रैक ऑफ कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ पे मूव कर रहा है. इवेंचुअली वी बिकेम एंटरप्रेन्योर्स बिकॉज वी डिड समथिंग जो पेरेंट्स को हेल्प कर रहा था उनके बच्चों की ट्रैकिंग में, एंड दिस हेल्प्ड अस इवॉल्विंग कैंपस 365 into an automation platform, including everything that we have right now. I'm sure our viewers want to know, मुश्किल तो बहुत रहा होगा. I'm sure there were a lot of hustles starting a company while doing a job simultaneously. So what was your initial hustle like? Divya, when I started in 2017, तो उस समय सिंस हमारे पास रिसोर्सेज भी इतने नहीं थे एंड मनी क्रंच ऑलवेज रहता है एक स्टार्टअप फाउंडर के लिए एंड स्टार्टअप्स के लिए. सो व्हाट आई डिड वाज, मैं कॉर्पोरेट में भी काम करता था एंड 9 घंटे की जॉब करने के बाद मैं ऑलमोस्ट लाइक अपने 6 से 7 घंटे अपने स्टार्टअप के पीछे स्पेंड करता था. And that's what my other co-founders Sandeep and Shashank were doing in their respective areas to make this company grow day by day.
So that is how we made this company bootstrapped for like last 3 years. हमने कंपनी को पूरा bootstrap किया. We focused into, everyone worked day and night, multiple shifts, multiple times हम लोगों ने काम किया है. And like countless sleepless nights हम लोगों ने गुजारी हैं. And like ultimately this helped us grow where Campus 365 is today. That was a big decision. So, was there anyone to guide you on your journey? I mean, we want to know who mentored you during that time. So Divya, when we started in 2017, तो उस वक्त हमारे पास रिसोर्सेज अदर दैन कोई गाइडिंग मेंटर एज सच नहीं थे, बिकॉज हम लोग भी नए थे इस फील्ड में. सो व्हाट ऑल थ्री ऑफ अस डिड इज़ वी रीच्ड आउट टू आवर लाइक टीम लीड्स जो जिनके अंडर हम लोग काम करते थे, एंड वी डिस्कस्ड आवर आइडिया विद देम कि क्या लगता है आपको. सो वी ट्राई टू गेन सम कॉन्फिडेंस बाय पुटिंग आवर आइडिया इन फ्रंट ऑफ देम एंड गेटिंग सम फीडबैक्स के हम लोग कि उन ये आइडिया सुन के उनके क्या फीडबैक्स आते हैं या क्या इन्हांसमेंट्स वो सजेस्ट कर सकते हैं. सो दोज पीपल और प्रीवियस बॉसेज ऑफ आवर्स वर द गो टू पर्सन फॉर अस, जहाँ से हमें ये गाइडेंस मिला. एंड 2 साल बूटस्ट्रैपिंग करने के बाद इन 2020 आई अप्लाइड टू यूइनसेप्ट मेंटरशिप प्रोग्राम, जहाँ पे एप्लीकेशन हमारी रिजेक्ट हो गई, बट दैट स्टिल kept us motivated in terms of कि हमको अपना प्रोडक्ट एंड अपनी चीज़ें और एनहांस करनी है टू मेक श्योर कि वो मार्केट फिट हो एंड टू मेक श्योर कि हम यूइनसेप्ट के सिलेक्शन क्राइटेरिया को फुलफिल करें, बिकॉज यूइनसेप्ट इज़ कनेक्टेड विद अ लॉट ऑफ एडटेक कंपनीज. एंड हमारा जो गोल है कैंपस 365 को आगे ले जाने का, वो यूइनसेप्ट के कनेक्शन से, यूइनसेप्ट के मेंटर्स से काफ़ी अच्छे से मैच होता था. वी ट्राइड 2020 में, एज आई एक्सप्लेन, के हम लोग फेल हो गए. सो आई सेट डाउन विद संदीप एंड शशांक एंड लाइक, यार हम लोग तो फेल हो गए यहाँ पे, अब क्या करें, एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है. तो शशांक वॉज द वन दैट मोटिवेटेड मी दैट टाइम कि यार अगर रिजेक्ट हुए हैं किसी स्पेसिफिक रीज़न की वजह से हुए होंगे, लेट्स बिल्ड वॉट वी आर बिल्डिंग, लेट्स ग्रो आवर सेल्फ एज वी आर ग्रोइंग. एंड अगेन जब नेक्स्ट कोहर्ट ओपन होगा यूइनसेप्ट का, हम लोग तब अप्लाई करेंगे. And eventually we applied again in 2021 and we got selected, and now here we are sitting at UIncept and discussing. UIncept में आने के बाद काफ़ी सारे स्कोप्स हमारे लिए ओपन हो गए, एंड दो स्कोप्स इंक्लूड्स, फर्स्ट इज़ मेंटरशिप. इतने अच्छे मेंटर्स अगर मैं स्पेसिफिकली कहीं ढूंढने जाऊँ मार्केट में, तो आई डोंट थिंक कि हम लोग को कहीं और मिल सकते हैं. द वे द मेंटर्स गाइडेड अस इन टर्म्स ऑफ के कहाँ पे हम कैंपस 365 को ले जा सकते हैं, एज वेल एज हम लोग क्या नई चीज़ें इंप्लीमेंट कर सकते हैं टू केटर द स्कूल एडटेक मार्केट मोर, ये सारी नॉलेज हमें यूइनसेप्ट से मिली. एंड यूइनसेप्ट ऑल्सो हेल्प्ड अस इन कनेक्टिंग विद अदर स्टार्टअप्स, जो हमारी सर्विसेज के बुके को और इन्हांस करता है इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग अ लॉट ऑफ न्यू फीचर्स to these schools, and not just schools but every stakeholders that are associated within schools, be it management, be it teachers, students or parents. यूनिसेप्ट में आने के बाद एक और चीज़ जो हमें मिला है, वो मिला है ग्लोबल एक्सपोजर, वेयर इन वी अटेंडेड दिस स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम ऑफ यूनिसेप्ट फ्यू मंथ्स बैक. एंड वहाँ से जो ग्लोबल एक्सपोजर हमें मिला, हम लोग मल्टी इंटरनेशनल स्टार्टअप्स के साथ कनेक्ट हुए, एंड उस एक्सपोजर ने हमको हेल्प किया है कि कैसे हम उनके प्रोडक्ट्स अपने प्रोडक्ट में इंटीग्रेट करके स्कूल्स के लिए एक और डोमेन हम ओपन कर सकते हैं कि क्या एक्स्ट्रा वो लोग अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं या करेंगे आने वाले टाइम में थ्रू अस, एज वेल एज कैसे उनका लर्निंग एक्सपीरियंस एंड स्कूल की क्रेडिबिलिटी इंक्रीज होगी इन सारे इम्प्लीमेंटेशन से. दिस इज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ यूइनसेप्ट. How's Campus 365 helping schools optimize the entire workflow while also making them ready for national education policy? What we have done is we did a extensive market research over the period of last 2 months, and market research करने के बाद we came, हम लोगों ने एक डॉक्यूमेंट बनाया with 36 points. अगर स्कूल वो सारे प्रोसेसेस एज इट इज़ फॉलो करता है, what we have mentioned in the document, they'll always run their school in profitability. So this is how school optimization part helps each and every school, not just tier 1 city schools but tier 2 and tier 3 city schools as well. Along with this,
since this government has already announced new education policy, what we have done is we again did a extensive market research and have enhanced our software wherein we understand all the processes that a school currently follow, and based on those analysis our system automatically generates a scoring for them, which is nothing but एक स्कूल को प्रिपेयर करता है कि हाउ मच दे आर रेडी इन टर्म्स ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी, और कैसे उसको उस पॉलिसी के लिए दे कैन बी 100% रेडी. This scoring that we are giving to schools is helping them getting ready for the future in combination with new education policy. How big is the addressable market in tier 2, tier 3 cities in India? If I talk about total schools in India, there are approximately 2.2 million schools, right? And majority of the shares of this 2.2 million is from tier 2 and tier 3 cities. These cities in combination, if we talk about in combination, they are like 60% market share is specifically from tier 2 and tier 3 cities. And these cities always look for a solution that is cost effective, but comes with good service. And that is where Campus 365 comes in as an end-to-end solution provider of whatever solution you need for schools, we have it. That is why we always place ourselves as in partners for schools and not just an ERP software provider for schools. Mayank, tell us, what milestones have you been able to successfully achieve so far during the journey of 3-4 years with Campus 365? We have reached 1,000 customers. We have reached 4 lakh students on our platform. We have reached more than 10,000 teachers and more than 5,000 private tutors on our platform that are helping students in terms of their personalized learning as well as boosting their learning capabilities. And private tutors are helping schools in terms of enhancing their work culture and the way they should teach to students. And in addition to these milestones, we recently closed our funding round as well. And that is the one of the biggest milestone for this year we were targeting, and we have successfully achieved it. Many congratulations on that. I think the first funding gives the founders the very needed boost to keep going, and it changes the entire dimension, I would say. थैंक यू दिव्या. इसका पूरा क्रेडिट जाता है उन लोगों पर जिन्होंने मुझ पर कभी गिव अप नहीं किया. दिस इंक्लूड्स माय फैमिली, माय को-फाउंडर्स, माय टीम, मनीष गुप्ता सर, मनीष उपाध्याय सर, एंड ऑब्वियसली यू एज वेल. एंड इन एडिशन टू दिस, एक एस्केलेटर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक स्टार्टअप जर्नी में, उस स्टार्टअप की जर्नी को और बेहतर बनाने में. मयंक, हमें बताइए, what are the 3 takeaways you want to give to the young startups who are starting up or are thinking of starting up आपकी जर्नी से, जिसे उन्हें प्रेरणा मिले? 3 चीज़ें जो मैं हर स्टार्टअप को फाउंडर को या जो लोग स्टार्ट करने वाले हैं, 3 चीज़ें मैं उन लोगों को जरूर बोलना चाहूँगा. ऑलवेज कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड. मेक श्योर कि आप जो भी स्टार्टअप प्लान कर रहे हैं, आप अपने कस्टमर को अपना प्रायोरिटी रखें, बिकॉज योर कस्टमर इज समवन जो आपका प्रोडक्ट यूज़ करेगा या आपकी सर्विसेज यूज़ करेगा. एंड थर्ड इज़ नेवर गिव अप. चाहे कुछ भी हो जाए, करना है मतलब करना है, पीछे नहीं हटना है. Thank you, Mayank. It was wonderful having you here with us today, and I wish you all the very best for your future endeavors. I'm sure the kind of transition that has come during COVID and post-COVID, and the kind of companies we are accelerating at UIncept, we would be able to come up with something disruptive for the edtech industry, and we'll get there together. So this brings us to the end of this episode. Thank you for watching You Talk with UIncept in association with Divvya's Closet. For our next episode, stay tuned.